Hello everyone and welcome to Defense Juice. I Kiran dealing with common errors. Today we will read about the preposition and after it we will do the vocabulary portion as usual. It is applicable for all defense examination and useful for all competitive examination. So here we go. So today we will read about the preposition and after it we will do the spotting the errors. Alright. So what is preposition, friends? We have read about the nouns, pronouns, alright, and in yesterday class we read about the articles. Okay, so words used with the nouns, pronouns to show their relationship are known as the preposition. Okay, the relationship between the noun and pronoun, okay, is known as the preposition, and you can also say that it is a bridge. It is a bridge between the noun and pronoun which join. Alright, so words which used with nouns as well as pronouns to show their relationship is known as preposition, like at, in, above, okay, below, upon, across. These all type of the preposition we will read in our upcoming classes. Preposition classes we will divide into 2 or 3 classes because it's a good topic and a vast topic. Alright, so the first word is in. Let's see in का use क्या क्या होता है. In is used for a bigger places. Alright, so in हम कहाँ use करते हैं? बड़ी places के लिए, right? और at क्या करते हैं? Small places के लिए. Just example, I live at शास्त्री नगर in मेरठ. So इसमें बड़ी जगह क्या है? मेरठ. और छोटी उसके अंदर सब डिविज़न है शास्त्री नगर का. Alright, so शास्त्री नगर में क्या आया? At आया. और in किस में आया? मेरठ में आया. Alright, next, I live in Meerut in UP, or we can say I live at Meerut in UP. See friends, at आता है सब डिवीज़न के लिए, alright, और स्मॉल प्लेसेस के लिए. okay, I live at village, okay, in district we can say, and we can make an example, any example where there is a small town and then a big city. Alright, we will use in for a city, at for a small town as district, and a small place or a subdivision. Alright, I think it's clear. So next example is I live at Meerut in UP. Alright, so next is देखो जो दूसरा वाला है ना, in और into. अब जहाँ movement या motion आता है we use into. Alright, into things in motion, जो चीज़ किस में होंगी? मोशन में होंगी. ऑलराइट, सो इन का और इन रेस्ट के लिए यूज़ होता है, into मोशन के लिए यूज़ होता है. इतना डिफरेंस है. सो एग्जाम्पल, ही इज़ शॉपिंग इन द मार्केट. ऑलराइट, ही इज़ शॉपिंग इन द मार्केट. सो क्या आया? इन आया. अब ही जम्प्ड इनटू द वेल. ओके, ये वेल है, ही जम्प्ड तो दौड़ के आया होगा. ऑलराइट, मोशन में होगा तो ही जम्प्ड इनटू द वेल, इसलिए क्या आया? इनटू आया. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, सी फ्रेंड, दिस आर द ट्रिक एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग प्रपोजिशन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ऑन. ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं? पोजीशन के लिए. ऑलराइट, और अपॉन किसके लिए? मूवमेंट के लिए. लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द टेबल. ओके, द कैट इज ऑन द टेबल. ऑलराइट, it is the position, it is telling about the position. but upon में क्या होता है? movement होता है. जैसे कि the cat pounced upon the mouse means movement में आई होगी ना. alright, next one is with. और with यूज़ होता है ना इंस्ट्रूमेंट के लिए, कोई भी चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट हो. और by किसके लिए यूज़ होता है? कोई एजेंट के लिए. alright, let's see an example, the letter was written by him with his pen. राइट, तो पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है. ओके, एजेंट क्या है? हिम है. ऑलराइट, द म्यूजिक वॉज जनरेटेड विद अ गिटार. ऑलराइट, तो किसके द्वारा जनरेट हुआ है? गिटार. तो गिटार क्या है? इंस्ट्रूमेंट है. दैट्स वाई वी यूज विथ. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अगो एंड बिफोर. जो अगो होता है ना, वी यूज फॉर द पास्ट. ऑलराइट, एंड बिफोर मीन्स सिंपली पहले. ऑलराइट, लेकिन बिफोर जो यूज़ होता है उसमें हमें क्या होते हैं? उसमें हमें स्टेटमेंट दी होती हैं, 2 प्रेसिडिंग स्टेटमेंट.
ओके तो हम क्या करते हैं, बिफोर दिस हैपेंड, ओके वी से लाइक दिस, राइट। सो पास्ट टाइम के लिए हम अगो यूज़ करते हैं, और बिफोर के लिए बिटवीन टू इवेंट्स होती हैं हमारे पास, तब हम क्या यूज़ करते हैं, बिफोर, ठीक है। precedence between the two events we use the before. All right, let's form an example. Long ago there was a king named Rama. See, बहुत पहले, ठीक है, बहुत समय की बात है उससे, तो क्या आएगा, long ago. All right, next one is the train arrived before the scheduled time. अब यहाँ क्या है, टू इवेंट्स हो रहे हैं ना, इवेंट्स हैं. All right, the train arrived before the scheduled time. All right, next one is above and below. All right, and over and under. Above and below, over, okay, over and under. All right, so mainly जो ये होते हैं above and below होता है, above and below ये पोजीशन को डिनोट करते हैं. All right, they denotes position, while over and under also carry a sense of covering or movement. अभी हम बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है, I was wearing 2 sweaters under the jackets, right? Under the jackets I wear 2 sweaters. तो covering है, all right? So he lives below the roof, all right? He lives below the roof. Okay, direct contact में नहीं है ना, roof direct contact में नहीं है. Okay, all right? Sky is above us, all right? Train is standing below the bridge. The bird is flying over the pond. Okay. नेक्स्ट वन इज़, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं टाइम के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जब ऑन टाइम होता है ना, तो टाइम इज़ एग्जैक्ट, ओके, इट इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम. व्हाट इज़ द टाइम, बाय योर वॉच भी बोलते हैं, ऑन योर वॉच भी बोलते हैं. ऑलराइट, जो ऑन होता है ना वो एग्जैक्टनेस को शो करता है, ऑलराइट, प्रिसिशन को शो करता है. सो ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम. दैट फ्लाइट इज़ ऑन टाइम मीन्स द फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, नीदर 1 minute late and 1 minute fast. Okay, it was, if it would be the time of 2 a.m, so it is in the 2 a.m. all right. Next is I arrived just in time. अब देखो फर्स्ट यूज़ हम टाइम का हमने ऑन के लिए यूज़ करा. अब नेक्स्ट देखते हैं जस्ट इन टाइम. अब जस्ट इन टाइम क्या था कि अभी मैं जैसे रीच करा, ये टाइम था, अगर मैं इससे थोड़ा भी देर हो जाता तो क्या हो जाता, ट्रेन चली जाती है. ऑल राइट, सो जस्ट इन टाइम ये होता है कि I caught the train or flight. All right. So next one is here, I arrived at the airport in good time. What does good time means? Means I have plenty of time now. I can do a lot of things. All right. It's known as good time. All right. Next is no preposition is placed after the following verb. अब कुछ ऐसे verbs हैं जिनके बाद हम preposition नहीं लगाते हैं, लाइक ऑफ नहीं लगाते हैं, एट नहीं लगाते हैं. ऑल राइट, जितने भी प्रपोजिशन होते हैं वो नहीं लगाते हैं. तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? दीज आर order, request, reach, attack, resemble, emphasis, accompany and discuss. All right, these are the preposition, these are the words which we don't apply preposition after them. All right, next one is we ordered a cup of tea. Okay, we ordered a cup of tea. अब order के बाद हमने नहीं लगाया ना preposition. All right, we reached the station बोला, we reached off the station नहीं बोला. All right, सो रीच्ड में, रिजेंबल में, एम्पीहाइसिस में, रीच में, अटैक में, रिक्वेस्ट में हम क्या नहीं लगा रहे थे, प्रपोजिशन नहीं लगा रहे थे. नेक्स्ट वन इज ही अकम्पनीज हर वेर एवर सी गोज. अकम्पनी के बाद वी डिडंट यूज प्रपोजिशन. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ. अब देखो टू कहाँ यूज़ करते हैं, वेर वी यूज टू. सो इन दिस वर्ड वी यूज दी टू. व्हाट आर दीज आर एडवाइस, all right, tell, ask, beg, command, encourage, request, inform and order. okay, या order. all right, so इनमें हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, टू यूज़ करते हैं. एडवाइस टू, ठीक है, टेल टू, आस्क टू, बैक टू, कमांड टू, encourage टू, रिक्वेस्ट टू, इन्फॉर्म टू, ऑर्डर टू. आई एडवाइज हिम टू स्टडी हार्ड. बेसिक एग्जाम्पल, आई कमांडेड हिम टू लीव. तो क्या आया है यहाँ, टू आया है कमांडेड के बाद, एडवाइस के बाद. ऑल राइट, next these are the question which we have to solve. There are 25 question. okay, more set of question we will do in our coming classes. So first one is we have to find the error, right? The first one is the widely published manifesto of the new party is not much different from then ours, no error.
See friend, where is the error here? So error is in the part first. Okay, the widely published manifesto है ना of the new party is not much different from than ours. देन आवर्स नहीं होगा, ठीक है, हमसे मतलब फ्रॉम आवर्स, हमसे होगा ना. सो किस में एरर है? सी पार्ट में. ओके, ए में नहीं है, सी में है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज. ऑलराइट, आई वॉज टेकन विथ नहीं होता, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज होता है. ऑलराइट, मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेजर ऑफ फ्री टाइम, नहीं फॉर फ्री टाइम. ऑफ फ्री टाइम तो ना फ्री टाइम के लिए ना. सो error is in the C part. Next one is this watch is superior and more expensive than that. See friend, B part में error है because this watch is superior to. Alright, to आना चाहिए. It was apparent for everyone present that if the patient didn't receive medical attention fast, he would die. So the error is in the part first. Okay, it was apparent to everyone. Alright. Next one is he knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectation. No error. See friend, error is in the part A. Alright, he knows very well what is expected, and we can say that error is in the B part. Alright, what is expected of him. Alright, what is expected of him. Alright, next one is he knows, ये तो हो गया. My brother has ordered for a new book. No error. See friend, here the error is in the part B. Alright, my brother has ordered a new book होगा. For a new book, what is this? Okay, my brother has ordered a new book. Alright, next one is that Brutus was so who was his trusted friend had attacked on him, caused heartbreak to zealous Caesar. No error. See friend, here the error is in the part B. ठीक है, द ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम. सो हियर हम क्या करेंगे, जो बी पार्ट है हमारा उसमें क्या करेंगे, ऑन हिम नहीं होगा, ठीक है, अटैक्ड हिम होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई. ब्लाइंड विथ एन वन आई, एक आँख के साथ नहीं ना. सो इसमें क्या है, एरर बी पार्ट में है. सो यहाँ क्या आना चाहिए था, इन आना चाहिए था. ऑलराइट, Rana Pratap was blind in. Right. Next one is the doctor attended to the patient very quietly. See friend, here the error is in the doctor attended है ना. So error हमारा किस में पार्ट है, डॉक्टर अटेंडेड टू में, टू नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, डॉक्टर अटेंडेड अपॉन. ऑलराइट, next one is I was shocked to hear that his father died of an accident. Died in accident. Alright, तो सी पार्ट में एरर है. I must start at dawn to reach the station in time. I must start, अब इसमें एरर देखो कहाँ है, इसमें क्या है, at dawn सी है, to reach the station सी फ्रेंड in time है ना. सो एरर किस में जाएगा, एरर किस में जाएगा, इन टाइम भी सही है हमारा. ऑलराइट, इन टाइम ही भी होता है. सो आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन बोल रहे हैं, राइट. सो इसमें आई मस्ट स्टार्ट बाय डाउन, तब तक पहुंच जाना चाहिए, बाय डॉन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज आई शेल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन. नो एरर. सी फ्रेंड, आई शेल पुट ऑन नहीं होता, पुट अप होगा. ऑलराइट, सो ए में एरर है. नन कुड डेयर टू encroach on his right. No error. जी फ्रेंड, इसमें एरर कहाँ जाएगा हमारा, सी पार्ट में. ओके, तो none could dare to encourage ओके on his right. so यहाँ पे क्या जाएगा, upon his right. alright, next one is the father brought the sweets and distributed them between his 5 children. See friend, अब जहाँ भी दो से ज़्यादा, आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू डिफरेंस between and among. alright, when there are more than 2 people, so we use among. alright, uses of among is whenever there are more than 2 people we use among. alright, and when there are only 2 people,
we use between you and I we say, all right. But there is one amongst भी होता है, all right. So amongst we use for a vowel sound, all right. I told you in my previous lecture. If you haven't seen, please go there and clear your concept about the vowel sound, all right. So between हम use करते हैं 2 लोगों के लिए and among more than 2. So यहाँ 5 है, so that's why the error is in the this part, C part, so we will use among there, all right. Raman developed the habit for sleeping late when he was staying in the hostel. No error. See friend, इसमें कहाँ error है? Raman developed the habit of sleeping, all right. It is the duty of every right thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live. So error is in the C part, okay. So तो live in होता है, ठीक है, live in होता है, right. Next one is the top ranking candidates will be appointed in the senior job in good company. See friend, here the error is in the B part, all right. So will be appointed है ना, in will be appointed to होगा, ठीक है, will be appointed to, all right. Next one is my niece has been married with the richest man of the town. No error. See friend, here the error is in the B part, all right. So we could write जो with है ना, इसको रिप्लेस करेंगे टू से, all right. My niece was married to, all right. The venue of examination is 1 mile further up the hill. No error. See friend, here the error is in the first part, all right. So इसमें क्या आएगा? The venue for examination. The doctor referred the patient for the OPD. देखो for the OPD नहीं होगा, right, to the OPD होगा, all right. A man who always convince on the fault of his children is their worst enemy. No error. See friend, इसमें error किसमें है? B part में, okay. A man who always convince at the fault, right. I don't understand why he is so angry at me. Angry with me आएगा, at me नहीं, all right, with me, all right. I am hearing a lot about the problem of AIDS these days. No error. See friend, इसमें error हमें find out करना है. So error is in the B part, okay. So I am hearing a lot of आएगा, ठीक है. because जितनी भी डिजीज़ वाली कंडीशन होती है ना, अब इसमें भी एड्स है ना, अबाउट नहीं आएगा, डिजीज़ ऑफ आएगा. क्या आएगा? डिजीज़ में सारी कंडीशन, डिजीज़ की सारी कंडीशन मोस्टली प्रपोजिशन ऑफ यूज़ होता है, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कांट distinguish a cheat for an honest person. See friend, when I read this, I feel that there is some disturbance in this sentence, right. means कि C part में कुछ गड़बड़ी है, right. A cheat for an honest person. So हमारा error किस में आ गया? ये C part में आ गया. So हमें क्या करना होगा? इसमें for को from से होगा, ठीक है, replace. A cheat from होगा, alright. So this is all for today. We did the preposition today. So here we have completed the error spotting pattern, okay. So today the more part is of vocabulary too. So we will read about the 10 new words, okay. The first one is protrude. See friend, it's a verb which means stick, all right. It means extend करना. प्रोट्यूड करना मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना, ठीक है. प्रोट्यूडिंग आईज बोलते हैं ना हम, डिजीज़ होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसमें हमारी क्या हो जाती है? आईज आर प्रोट्यूटेड, राइट. सो वो उससे क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कैपेसिटी, ऑलराइट. सो इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? संकन, ठीक है. प्रोट्यूड नहीं हुई, ठीक है, धसी हुई, उनको क्या बोलते हैं? संकन, ऑलराइट. सो सिनोनिम क्या हमारा? जट और प्रोसेक्स. सी फ्रेंड, जट मतलब क्या होता है वो देखते हैं. जट मतलब क्या है? बियॉन्ड द मेन बॉडी, ठीक है, बियॉन्ड मेन बॉडी, ऑलराइट. सो सेंटेंस, इट वाज समथिंग लाइक अ फैन प्रोट्यूड फ्रॉम द वाटर, ऑलराइट. प्रोट्यूड मतलब क्या होता है? स्टिक आउट, निकलना बाहर को, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक. सी फ्रेंड्स, सिंबॉलिक क्या होता है? केओटिक. और लिटरल मीनिंग क्या है सिंबॉलिक की? मिसमैनेज्ड, ऑलराइट. Symbolic means mismanaged, all right. So
synonym is disorganized and muddled. See friend, muddles means क्या होता है, not arranged in order. ठीक है, not arranged in order, order में नहीं arrange करना क्या बोलते हैं, muddled बोलते हैं. Alright, so opposite क्या हो जाएगा, efficient. Alright, so sentence, the department's symbolic accounting led to company's downfall. Next one is alcarity. See friend, alcarity is a noun which means promptness. क्या होता है, promptness. Alright, prompt मतलब क्या होता है, readiness, eagerness. Alright, willingness. So opposite क्या हो जाएगा, apathy, because it means interest नहीं होना. Alright, interest नहीं होना is known as apathy. Let's form an example. She accepted the invitation with the pure alcarity, eagerness. Alright. Next one is abject. This question has been asked many times as a synonym and antonym in the examination. Alright. So abject is an adjective which means obsequious. Alright. Which means obsequious. Synonyms is groping. It is groving. Okay. Groveling and crawling. See friend, abject here means completely without pride. Okay. Completely without pride. All right, so synonym would be groveling and crawling. All right, so behaving respectfully to a person whom you are fear of is known as groveling, crawling. All right, so antonym would be proud. क्या हो जाएगा, proud. All right, so abject का sentence, an abject apology come from his end today. Next word is stifle. Okay, it is stifle. Stifle क्या है, verb है. Alright, which means constrain. See friend, constrain क्या होता है, hamper करना और hindrance create करना is known as stifle. और unable to breathe, or simply we case can say that unable to breathe. Alright, इसका stifle मतलब होता है, तो that's why it is known as constrained or hinder or hamper. So opposite would be encouraged. Opposite would be encouraged. Alright. Sentence, high taxes are stifling private enterprises. Stifling means constraint होना और difficulty in breathing, unable to breathe. Okay, just a phrase. Next one is cumbersome. See friend, cumbersome means क्या होता है, unwieldy, or it's an adjective. Okay, it's an adjective and you can say it is unmanageable and awkward situation. Cumbersome situation you could say. Antonym is manageable. Let's form an example. Diving suits are usually cumbersome. Alright, means unwieldy, unmanageable and awkward. Alright, next is decipher. See friend, decipher means क्या होता है, किसी कोई कोड है, alright, encoded है, so उसको decode करना is known as decipher. Alright, and we can say decrypt करना. Alright, and break करना, so opposite would be encode करना. Let's form an example. Authorized government agency can decipher encrypted telecommunication. Simple one. Next one is scurrilous. It's an adjective which means abusive. See friend, scurrilous means क्या होता है, insulting. क्या होता है, insulting. We were, it means insulting. Alright, so synonym would be vituperative. See friend, vituperative means क्या होता है, it means bitterly, very bitter abuse. Alright, bitter abuse. So next one is derogatory. See friend, derogatory means disrespect attitude. You're showing disrespect attitude toward anybody, you can use the word derogatory. Alright, so opposite would be praising. Let's form an example. It was a scurrilous attack on his integrity. Alright, next one is muffle. It is muffle. See friend, I told you in my previous classes like softening को हम भी muffle बोल सकते हैं. Right, so इसका क्या है, didn't. See, didn't here means less stronger or intense. Alright, less intense. Synonym would be dull and dampen. See, dampen means क्या होता है,
Dampen means make less strong. If you are making something less strong is known as dampen. Antonym would be loud. Alright, let's form an example. His voice was muffled due to the distance. Means his voice was not loud, it was dull due to the distance. Alright, next one is transgress. See friend, transgress is a commonly used word which is in verb, which means misbehave karna. Alright, which means misbehave. और synonym is elapse. See friend, elapse मतलब क्या होता है? Error. Okay, elapse मतलब क्या होता है? Error. Alright, so antonym would be obey, obedient, sincere. Alright, let's form a sentence. He had transgressed on unwritten social law. Means he had misbehavior. Alright, so this was all for today. Means what we have completed. Now this is the quiz time. You have to find that what is the correct answer. You have to see how much do you know. Alright, first one is prelude. See friend, you have to find the opposite. Okay, so what would be the opposite of prelude? I told you prelude means होता है project, strike out करना. Alright, jert. So antonym क्या हो जाएगा? Sunken. क्या हो जाएगा? Sunken. Alright, next word is scambolic. See friend, scambolic का opposite हो जाएगा efficient, because all of them are the similar meaning to scambolic. Next one is alcarity. Alcarity का opposite होगा apathy, disinterest. Okay, not interested. Abject का opposite रहेगा proud. Alright, and next one is stifle. See friend, stifle मतलब क्या होता है? Constraint. So opposite would be encouraging. Cumbersome का opposite रहेगा manageable. Alright, next one is decipher. See friend, decipher I told you it means decode करना, so opposite would be encode करना. Alright, next one is scurrilous. See friend, scurrilous I told you what does it mean? It means abusive. Alright, so antonym would be praising. Next one is muffle. Muffle means muffle I told you what does muffle stand for? It is dull and dampened, so opposite would be loud. Alright, next one is transgress. Transgress means misbehave. Alright, so antonym would be obey. Alright, we did with the quiz 2. So if you like the session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. In case you don't know that we have live classes too of maths at 6 p.m. and of SSB at 8 p.m. Do visit there. Thank you. Keep learning. Jai Hind.